Hello students, today I'm going to start a very interesting and important topic in physical chemistry, chemical thermodynamics. Now, before starting with the studies of chemical thermodynamics, first let us try to understand what is the meaning of thermodynamics. तो ये जो word है thermodynamic, it's a Greek word. जिसमें therms means thermal energy, that is heat, or you can say energy. And dynamics means flow, movement, motion, change, or you can say a power. So if there is a flow of heat in a particular process, over there we are studying thermodynamics. अब ये thermodynamics जो flow of heat के बारे में discussion है, you can apply this thermodynamic in physics as well as in chemistry. So we are going to learn thermodynamics in a chemical reactions. That is why the name of the chapter is chemical thermodynamics. बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसके एप्लीकेशंस मतलब थर्मोडायनामिक्स का सिंपल एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन क्या है और ये फ्लो ऑफ हीट क्या है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल के यूनिवर्स हैज एनर्जी एंड मैटर. हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट्स एनर्जी एंड मैटर. और कोई भी मैटर को ध्यान से सुनना, कोई भी मैटर को वर्क में कन्वर्ट करना है. इफ यू वांट टू वर्क और इफ यू वांट टू कन्वर्ट energy into another form of energy, उसमें हीट फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है. I'll give you a very simple example. अगर मैटर से वर्क कन्वर्ट करना है तो फॉर एग्जाम्पल डिस्कवरी ऑफ फायर. अब फायर कैसा डिस्कवर हुआ है? तो डिस्कवरी ऑफ फायर इज दैट व्हेन यू टेक टू स्टोन्स, ओके, यू स्टार्ट रबिंग इट, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन यू विल सी सम scintillation, some spark, थोड़ी लाइट दिखाई देगी आपको. दैट इज वो हीट है. दैट इज नथिंग बट द हीट एनर्जी के वजह से यू कैन सी बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन यू कैन सी दैट स्पार्क, दैट scintillation जो आपको वेल्डिंग प्रोसेस में दिखाई देती है. नाउ दैट इज द थिंग कि व्हेन यू टेक दैट टू स्टोन्स क्लोज टू अ ड्राई ग्रास and start hitting each other at a very high speed, so what will happen? The grass will start burning, क्योंकि उसके अंदर से जो चिंगारी निकलेगी वो ग्रास को बर्न करेगी. ओके, अब ग्रास की जगह पे अब वुड ऐड कर दोगे थोड़ा सा, तो वुड भी बर्न होना चालू हो जाएगा. एंड ओवर दैट यू कैन कुक फूड, यू कैन बॉइल वाटर ऑन इट. सो सी प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन you get a certain amount of energy because of which you can cook food, because of which you can boil water. So food cook हो गया मतलब work is done. आपने क्या यूज किया है? वुड यूज किया है या ग्रास यूज किया है या काउडंग यूज किया एज अ फ्यूल. और उस फ्यूल, दैट इज द मैटर, उससे कोई काम निकालना है तो फ्लो ऑफ हीट आपने देखा. So that is a simple application of thermodynamics. मतलब thermodynamics तभी एग्जिस्ट करता है जब ह्यूमन को साइंस के बारे में भी पता नहीं था. So wherever there is a flow of heat involved of thermodynamic part, for अब ये आप examples देखो. For example, construction of a cell where you put chemical inside, okay, the chemical energy will be converted into an electrical energy. Okay, that is you making a battery. Then use a battery in a particular circuit. For example, हमारा cell phone, आपने उसके अंदर battery add किया है, cell phone start हो जाएगा. After some time, when you keep using it for a longer time, the cell phone become hot. Flow of heat हो रहा है, plus electrical energy work में भी convert हो रहा है, but कहीं ना कहीं आपको flow of heat दिखाई दे रहा है. You add a fuel into a vehicle, कार में फ्यूल ऐड किया या बाइक में फ्यूल ऐड किया है, and you start the combustion engine with the help of a electrical energy, that is a battery in your vehicle. आपने combustion engine start किया है, उसके अंदर फ्यूल जाएगा, फ्यूल combustion में जाएगा and mechanical energy में convert हो जाएगी, the bike start moving. but आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि combustion reaction is an exothermic reaction, gives out heat. इसके लिए पूरी बाइक जो है after some time running it becomes hot. so heat energy कंबशन का प्रोसेस होता है. कंबशन की एनर्जी, जब कंबशन रिएक्शन होता है तो हीट एनर्जी इज गिवन आउट. तो यहां पर भी हीट इन्वॉल्व है. यू टॉक अबाउट अ हाइड्रो पावर प्लांट. अब हाइड्रो पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, हम लोग समझो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे, तो लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रो पावर प्लांट. तो आपने देखा होगा हाइड्रो पावर प्लांट में व्हाट दे डू, दे स्टोर अ वाटर एट अ वेरी हाई. लाइक इन केस ऑफ डैम, एक सर्टेन हाइट पे वाटर को स्टोर किया जाता है. ओके, देन
when the knobs are open, the water is allowed to flow from that height. So when the water is stored at a certain height, it has a potential energy. When it is flowing, the potential energy converts into kinetic energy. When that high speed motor hits the turbine will start moving. And at a very high RPM, revolution per minute of a turbine, electricity is generated. And that electrical wires, the wires are attached to electrical devices, and you can have a different type of work using it. अब सबसे simple example ये है कि वो जो water flow हो रहा है with a high kinetic energy, it moves a turbine, because of which mechanical energy is produced. And because of the mechanical energy, when the turbine moves, the coil moves under magnetic field. If you remember, any electrical field moves under magnetic field, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. अब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उससे हम लोगों को क्या मिल रहा है? लाइट एनर्जी. सपोज यू कनेक्टेड टू अ लाइट्स, तो लाइट एनर्जी मिलेगा. अब सपोज आपने एक बल्ब कनेक्ट किया, यू गेट अ लाइट एनर्जी फ्रॉम इट, बट आफ्टर सम टाइम you cannot touch that bulb become hot. क्यों ऐसा हो रहा है? Because of the high speed electron to which are carrying current, the high speed electron, when they are moving with a high kinetic energy, they are producing a lot of heat. They are passing through the tungsten filament in the bulb. तो bulb से आपको light energy मिल गई, वो bulb गर्म हो गया. Heat energy involved. See, there is a flow of heat everywhere. There is a flow of heat. So maximum time you will see a heat flow required for conversion of matter into the another matter or carrying out a certain work. So chemical reaction में भी हम लोग यही करते हैं. Chemical reaction के अंदर what happens in the chemical reaction? In terms of chemical reaction, the reactants are reactant making products. Either the reaction can be exothermic or can be endothermic, where the heat is evolved or the heat is absorbed. So heat is involved in it. And sometimes the heat becomes so important that chemical reactions के product मायने ही नहीं रखते. For example, आपको heat energy चाहिए, आपने coal burn किया, so burning of coal is a combustion reaction which gives you heat energy, but you are not interested in the product. अब अगर coal को burn करोगे तो CO2 गैस मिलेगा, आपको CO2 गैस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको heat energy में उसमें इन्वेस्ट है to carry out the work. आपको कोई चीज हीट करना है, आप कोल बर्न कर रहे हो, वुड बर्न कर रहे हो, लाइक दैट. अब एलपीजी गैस में प्रोपेन है, वो बर्न हो रहा है, तो आप लोग यू कैन कुक फूड ऑन अ गैस. सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? हीट इन्वॉल्व हो रही है. सो देयर इज अ फ्लो ऑफ हीट. सो एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि हीट, मैटर, वर्क और मैटर इनटू अनदर मैटर, हीट, ये सब आपस में इन्वॉल्व होते हैं. तो इट इज अ फ्लो ऑफ हीट. We study thermodynamics, and if you study thermodynamics in terms of chemical processes, in terms of chemical energy, then it is called as a chemical thermodynamics. So basically thermodynamics is that branch of a physical chemistry which help us to understand the flow of heat, or you can say conversion of heat from one form to the another form of the energy, qualitatively and quantitatively. So that is chemical thermodynamics. So simple example याद रखने आपको, flow of heat thermodynamics. एक matchstick भी आप burn कर रहे हो, so you're burning it. Suppose there is a dark room, you're burning a matchstick for the sake of light, but there is a flow of heat to get your light energy. So there is a flow of heat in the different processes of our life. Whatever things we use, अब आप food consume कर रहे हो, तो food combustion में जा रहा है, body के अंदर digestion में हो रहा है, you're getting certain energy to do work. आप मूव करना चालू कर दिए, तो मतलब आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है. बट वो काइनेटिक एनर्जी जब आप यूज करोगे, व्हेन यू मूव एट अ वेरी फास्टर रेट, तो आपको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा. देन एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन? एट दैट टाइम यू विल स्टार्ट पर्सपायरिंग, यू विल स्टार्ट लूजिंग आउट हीट टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. तो वो हीट कैसा लॉस हो रही है? हीट लॉस हो रही है बाय पर्सपिरेशन. सो अगेन हीट इज इन्वॉल्व इन वर्क प्रोसेस. हम लोग एक मैटर है, वी आर अ सिस्टम, वी आर कंज्यूमिंग मैटर. When we consume matter, we try to do work. When we try to do work, we are using the energy from that matter. तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको heat, or you can say heat is a form of energy, or you can say energy is flowing, is involved. So that is also a thermodynamic. So chemical thermodynamics specifically deals with the chemical processes, with the chemical reactions. Okay. सो अब थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस, या फिजिक्स में जाओगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स के. जब पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक्सप्लेनेशन है, या सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट में फ्यूल है, वहां पर भी थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस इन्वॉल्व है. ऑल दोस थिंग्स आर इन्वॉल्व इन थर्मोडायनेमिक्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद मोर डिटेलिंग विद द चैप्टर ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. तो अभी इस चैप्टर में हम लोग ने डेफिनेशन पहले समझ लिया
कि chemical thermodynamics is that branch of a physical chemistry which help us to understand the relationship of heat, or you can say energy, with the other form of energies. Now, ये चैप्टर में हम लोग सबसे पहली बात क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर जो है ना, ये पूरा के पूरा ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड, जिसमें जो आपको लॉज भी मिलेंगे, दोज लॉज आर ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, और वो 3 लॉज के ऊपर ही पूरा चैप्टर है, एंड मेनली फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. तो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस, और ये रिलेशंस कैसे बैठेंगे, ये थोड़ा सा एक हम लोग आइडिया ले लेते हैं. सो यू हैव टू कीप note of some important points. So the first important point is Q, that is heat, work, capital U, which stands for internal energy. वो आप बोलेंगे सर हीट वर्क समझ में आया, ये इंटरनल एनर्जी क्या है? सो इंटरनल एनर्जी is the energy stored, is the sum of all energy stored inside a system. अब thermodynamics डील करता है सिस्टम और सराउंडिंग में. सिस्टम एक वो जगह है जहां पर हीट फ्लो हो रहा है, और उसके बाहर की जो भी जगह होगी वो सराउंडिंग होगी. हम लोग और आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. सो U is nothing but the internal energy, the sum of all energies inside a system. For example, a human system, हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, हमारे अंदर साउंड एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो वी आर कॉम्प्रेस ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. सम ऑफ ऑल एनर्जीज आर कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, तो आपको याद रखना है हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं समझाने के. फॉर एग्जांपल, सपोज दिस इज अ मेटालिक कंटेनर. हम लोगों ने एक मेटालिक कंटेनर लिया, इसमें फ्रीली मूवेबल पिस्टन यूज किया. ओके, एयर टाइट, फ्रिक्शनलेस, फ्रीली मूवेबल पिस्टन which can move up and down. And we took a gas inside here. We took 2 gases, that is A gas, 1 mole of A gas, 1 mole of B gas. Okay, हम लोग ने इसके अंदर ऐड कर दिया. So A and B are added to it. So what will happen when A and B react? When you just warm it, suppose A and B react to produce AB. Okay, and or I say byproduct. The product is when A and B react, they gives you what? C and D. Suppose C gas and D gas they produce. Plus they produce a lot of heat because this is suppose an exothermic reaction. Okay, तो हम लोग एक बात कर रहे हैं exothermic reaction की. So exothermic reaction यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर सब गैस के मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट है और फिर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे. प्लस यहाँ पर क्या जनरेट होगी? हीट. So before the reaction, when you add just A and B together, the energy of the entire system inside, अब जो अंदर का एरिया हो गया कंटेनर की वो सिस्टम है और बाहर का एरिया हो गया सराउंडिंग. लेट द एनर्जी, द इंटरनल एनर्जी बी U1. अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल एनर्जीज. तो अभी गैस के अंदर बॉन्डिंग एनर्जी होगी, आपस में गैस जो बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज बॉन्डिंग एनर्जी होती है, इनमें न्यूक्लियर एनर्जी होती है, बट गैस के अंदर सबसे ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी. So you add kinetic energy, potential energy, nuclear energy, all those energies together in a gas, it compress, it mixed to it gives you internal energy. The calculation of this value of U1. So you have this internal energy U1 here. This is the initial internal energy of a substance. आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, थोड़ा सा वार्म किया, ये आपस में रिएक्ट करना चालू कर देंगे. They produce C and D and they also produce lot of heat to it. अब इसको जब इनिशियली हीट सप्लाई कर रहे हो, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब यू आर सप्लाइंग एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन. रिएक्शन स्टार्ट हो गया, सी एंड डी पड़ा और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हुआ. इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो व्हाट विल हैपन? बिकॉज ऑफ हीट, द मॉलिक्यूल्स, द गैसियस मॉलिक्यूल्स इनसाइड, दे विल गेन दैट हीट, एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल का बढ़ेगा. तो अगर काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल का बढ़ेगा तो सी this gaseous molecule will start colliding with a very high speed with the walls of the container, as well as they will collide with the
balls of the piston. So now what will happen? Think about it. When this thing happen, heat ho gaya, they will start hitting the surface of piston. So what will happen? The piston will start moving. देखो ये move होते थोड़ा ऊपर आ गया. Piston has start moving in the upward direction. Why? Because gas is molecule exerting more pressure on the piston, so they're moving upward. So when the heat is produced, the entire gaseous system has gained certain energy. So after the reaction, there will be a new energy setup that will be U2, because internal energy अब बढ़ जाएगी, क्योंकि internal energy sum of all the energies, और gases में सबसे maximum energy होती है kinetic, तो heat से kinetic energy of the gases will increase, so इनका internal energy बढ़ जाएगा. So U2 minus U1 will give you an idea of delta U, that is change in internal energy. System simply समझना, change in internal energy, that is delta U. आपने calculate कर लिया. Now piston has start moving upwards. If piston is moving upward, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि certain amount of work is done. A certain amount of work is done. अब अंदर का जो एरिया है वो सिस्टम है, बाहर का एरिया जो हो जाएगा वो सराउंडिंग है. So you need to understand कि अगर सिस्टम से गैस मॉलिक्यूल्स पुश कर रहे हैं, किसको पुश कर रहे हैं? पिस्टन को. So the piston is moving in the upward direction. If it is moving in the upward direction, मतलब this time system is doing work on surrounding. You need to remember this. So see, the heat Q is released in the reaction. This reaction is exothermic process, because of which the internal energy of the substance changes. If the internal energy is increasing, the gas is getting more amount of kinetic energy. It will start hitting the piston, and the work is done by the system on the surrounding, because the piston is moving in the upward direction. If it moves in the downward direction, it means that the surrounding is doing work on the system. मतलब एक चीज आपको इतना समझना जरूरी है फिल वक्त के लिए कि heat, work and internal energy are related to each other. Heat, work and internal energy are related to heat. आप सपोज जॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया और फिर फास्ट स्प्रिंट कर रहे हैं, तो what will happen? Your pressure, the blood pressure, the amount of flow of blood will increase. बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बट टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम बॉडी में है. सो व्हाट विल हैपन? द बॉडी विल लूज आउट वाटर, सॉल्ट वाटर, दैट इज perspiration, बिकॉज उसको साथ में क्या रिलीज करना है? बॉडी से हीट रिलीज करना है, ताकि आपका टेम्परेचर वापस ऑप्टिमल लेवल पे आ जाए. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हेन यू आर रनिंग, what is happening? You're doing certain amount of work. What happens to your energy in the end? Your energy will decrease. That is internal energy. You will lose some energy. Obviously, you will burn some calories. You say, no, we burn calories while we work out. So here, see, the heat is involved. You're losing out heat. That is nothing but the burning of calorie ka byproduct. The calories undergoes combustion, because when you start moving at a faster rate, the body, the respiration process, the glycolytic cycle will start. It will start eating up your the oxidative cycle will start, and it will start eating up your fats. It will start taking energy from the fats. It will give out heat, and the heat will be released. So see, your heat, work, internal energy, all are related to each other. All three are related to each other. That is a human experience law. That is basically you need to understand first this point. Okay, I'll clear this up. So heat, work and internal energy are related to each other. Second, you need to understand about the spontaneity. Spontaneity. Spontaneous process. Why? What is the meaning of spontaneous process? Anything which take place on its own accord by itself, that is spontaneous. आप काम खुद से करोगे वो spontaneous है. Quick fast का मतलब spontaneous नहीं. Spontaneous means anything which is taking place by its own accord by itself, खुद से जो हो जाएगी spontaneous है. Waterfall spontaneous है, rainfall spontaneous है. Okay, spontaneous है. जो एक्सिस पे मूव कर रहा है, अराउंड सन मूव कर रहा है, स्पॉन्टेनियस. जो चीज खुद से हो रही है उसको स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, और जो चीज खुद से हो जाए उसके अंदर टाइम और एनर्जी कम लगती है. ऑब्वियस बात है. तो सारे साइंटिस्ट दुनिया में क्या सर्च करते रहते हैं? स्पॉन्टेनिटी सर्च करते हैं हर चीज में, कि अगर प्रोसेस खुद ब खुद हो जाए तो इन अ लेस टाइम
you can have a more amount of product and you require less energy for it. So spontaneity is a very important process. हम लोग सब spontaneity की तलाश में रहते हैं, खुद से कुछ ऐसे काम हो जाए जिससे हमारा जो है वो वर्क और ज्यादा इंक्रीज हो. So spontaneity is very important. So you can find the processes, the chemical processes, spontaneous or non-spontaneous. Okay, now ये spontaneity find करना कैसा है? So to understand spontaneity, you have to understand spontaneous process. You need to understand a term called as entropy. Entropy, denoted by capital S. Now, what is entropy? Entropy is a measurement of randomness. The measurement of randomness is called as entropy. What is randomness? Randomness is a chaotic things happening. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जब लेक्चर चल रहा है और सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, so they are properly aligned systematically at one place. They are attending a particular lecture, so they are not allowed to move. जो जहां पर है वहीं पर ही बैठा है. But when the lecture is over, the school or the college is over, or you see the entrance gate of the students, all the students will leave the gate. They will come out of the gate randomly. They move out into random direction with a random speed. So that is the called as entropy. But the student sitting inside the class, the entropy is less because there is less randomness. But once the college or the school is over and the student came out of that, so you will see student moving in a random direction with a random speed, with a random arrangement. So that actually counts the increase in entropy. So जब वो क्लास में थे एंट्रोपी बहुत कम थी, जब वो बाहर आ गए एंट्रोपी बहुत ज्यादा हो गई. So entropy is nothing but the measurement of randomness. अब आप खुद सोचो, if you talk about ice, उसमें H2O मॉलिक्यूल प्रॉपरली अलाइंड है, इसके लिए आइस को हम लोग क्रिस्टलाइन बोलते हैं. When it melts to form a water, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं वी शेप के. The intermolecular forces are lesser than the solid and they are randomly arranged. कहीं पर भी कोई भी वाटर मॉलिक्यूल आपको दिखेगा. That is why we say water does not, मतलब liquid does not have their own shape. They acquire the shape of the container. Why? Because they don't have that arrangement of the particle in a proper manner. So जब आइस मेल्ट होके वाटर बनती है तब रैंडमनेस इंक्रीज होता है, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होता है. और वही वाटर जब इवेपोरेट हो जाएगा तो गैसियस मॉलिक्यूल has very less, least negligible intermolecular force of attraction. They can move in any direction, कहीं भी randomly travel कर रहे with random speed. So वहां पर तो एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ गई. अब आप खुद सोचिए, अगर मैं आइस को निकाल के रख दूंगा बाहर तो वो एटमॉस्फेयर की हीट लेके खुद से ही मेल्ट होगा. मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इवेपोरेशन ऑफ वाटर खुद से हो जाएगा. रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता है, खुद से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. सो दैट इज आल्सो अ spontaneous process. So think about it. Melting of ice is a spontaneous process. Evaporation of water is a spontaneous process. और ये दोनों प्रोसेस अगर बराबर देखोगे तो what happens to the entropy, the randomness is increasing because ice में वो ज्यादा क्रिस्टलाइन थे. उसके बाद में वो लिक्विड फॉर्म में आए तो उनकी क्रिस्टलाइन नेचर बहुत कम हो गया, चला गया, लॉस हो गया. रैंडमली वाटर अरेंज है और उसके बाद वो इवेपोरेट हो गए तो और ज्यादा रैंडमनेस बढ़ गई. सो इसका मतलब क्या हो गया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लीड्स टू इंक्रीज इन एंट्रोपी. चाहे वो एंट्रोपी सिस्टम का हो या एंट्रोपी सराउंडिंग का हो, टोटल एंट्रोपी बढ़ेगा. मतलब अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी बढ़ेगा. और हम लोग चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करते हैं, दैट इज डेल्टा एस. Like change in internal energy, we find change in entropy. So the change in entropy will be increasing, matlab it will always be positive. So if the process is spontaneous, the change in entropy is positive. Either the change of system, entropy of system हो या entropy surrounding हो, दोनों को add करोगे, दोनों को entropy system और surrounding का तो वो positive ही निकलेगा. तो for a spontaneous process, the randomness will increase. जैसे दुनिया का randomness बढ़ता ही जा रहा है. You see more random in your life and things around you. ओके, तो ये दूसरी चीज आपको याद रखना है. पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वर्क, हीट एंड इंटरनल एनर्जी कैसा रिलेटेड है. एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया. सेकेंडली, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ सपोज वी रिवर्स इट,
सपोज हमने वाटर लिया, तो वाटर में रैंडमनेस बहुत ज्यादा है, एंट्रोपी ज्यादा है एज कंपेयर टू आइस। बट व्हेन यू स्टार्ट कूलिंग इट, वो आइस फॉर्मेशन में आ जाएगा, और उसको आप और कूल करते जा रहे हो, और कूल करते जा रहे हो, तो व्हाट हैपेंस टू द रैंडमनेस ऑफ द पार्टिकल? द रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल विल डिक्रीज। अभी आप सबसे लीस्ट टेम्परेचर ले लो, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन इज -273 डिग्री सेल्सियस, जो थर्मोडायनेमिक में 0 केल्विन कहा जाता है। तो लीस्ट टेम्परेचर हम लोग ने ले लिया माइनस में, -273। तो वहां तक की कूल कर दोगे कोई गैस को, ऐसा होता नहीं है, बट हमने समझो किया कि वहां तक की कूल कर दोगे। सो व्हाट हैपेंस टू द रैंडमनेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल? वो पूरी लॉस हो जाएगी। अगर रैंडमनेस पूरी लॉस हो जाएगी, सब प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे इतने कम टेम्परेचर पे, जब वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे, तो एट दैट टाइम the entropy becomes what? Zero. So you have to remember this also. This is the basically the third law, which is related with the crystalline state. Okay, when a substance is being cooled to absolute zero temperature, आप उसको 0 केल्विन पे लेके चले गए, बहुत ज्यादा कूल कर दिया, तो they will lose their entropy, और randomness उनका बहुत कम हो जाएगा, negligible, and we can say the entropy will be equal to what? Zero. Plus, there is one more law, fourth law. That is fourth law. Sorry, that is the zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of the thermodynamic, which was actually framed by after first law. और zeroth law बहुत सिंपल है कि आपने दो बॉडी ली है, ए और बी, दो सब्सटेंस है, वो सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। दोनों ए और बी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो ए और बी भी आपस में एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि when you place a hot body with a cold body, then the flow of it will take place. कब तक के? when the two bodies will acquire the same temperature at equilibrium, when they reach to an equilibrium. So that is the zeroth law of thermodynamics. So पूरा thermodynamics हमको ये सब लॉस पे डिपेंड है। जहां पर आप टर्म्स देखोगे, कौन से टर्म्स देखोगे? You will see a terms work, then you will see Q, that is heat, जो मैंने बताया है, delta U, that is change in internal energy, okay, delta S, that is change in entropy, delta H, that is change in enthalpy, आपने देखा होगा enthalpy, which is the total heat content of the system। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि if एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस, तो दैट विल बी डेल्टा एच वैल्यू। अगर वो एंडोथर्मिक है तो हीट इज पॉजिटिव, मतलब अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस, तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। आपने एंथैल्पी के बारे में देखा है, और आपने एंथैल्पी हीट कंटेंट को आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब चीज में भी डिफाइन किया था। ओके, so you will come across all these terms in thermodynamics which you need to be। अच्छा, दूसरे पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो आपको दिखते ही रहेंगे, मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो ये टर्म्स भी आपको दिखते रहेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ओके, तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, मैं फिर से एक आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में क्या देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक्स? So thermodynamics terms means heat, dynamics means flow, motion, change or power of heat. And whenever there is a heat flow taking place, we can have a conversion of matter into work, or one matter into another matter. Like in case of chemical process, reactor into converts into product, where the heat has been absorbed or the heat has been released. So wherever you study the flow of heat, that is called as thermodynamic। आप उसको chemical process में पढ़े तो उसको chemical thermodynamics बोलोगे। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली ह्यूमन एक्सपीरियंस चैप्टर है, इसका कोई भी थियोरेटिकल एविडेंस नहीं है, तो इट्स ह्यूमन बेस्ड एक्सपीरियंस चैप्टर व्हिच यू कैन वेयर यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज आल्सो ह्यूमन एक्सपीरियंस बेस। जिसमें आपको फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले याद रखना है फर्स्ट लॉ के लिए कि हीट, दैट इज क्यू, इंटरनल एनर्जी, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू, एंड वर्क इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सेकेंड, आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी will always increase, चाहे वो सिस्टम की हो, सराउंडिंग की हो, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव आएगा। एंड एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। एंड प्लस व्हेन यू कूल अ सब्सटेंस टू एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर, इट विल लूज देयर रैंडमनेस, they will achieve to a great crystalline state where you can say the entropy is zero। So guys, this was the introductory topic of chemical thermodynamics। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बेसिक टर्म्स को इन्वॉल्व करेंगे, and we'll try to understand what are the basic terms in thermodynamics। Okay guys।
Bye. Take care.